हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है विच इज P phi NZ डिवाइड बाय 60A। तो यहाँ से हम लोग N विच इज द स्पीड उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं विच इज EB इंटू 60 इंटू A डिवाइड बाय P phi Z। तो यहाँ पे EB बाय phi हमारा बाहर आ जाएगा एंड 60A डिवाइड बाय PZ हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे, तो इसको हम लोग के कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं। बट जो हमारा ईबी होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है विच इज बी माइनस आई ए आर ए। तो यहां से हमें एन का फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है विच इज के इंटू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइड बाय 5। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे एन पे डिपेंड करते हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे मेथड्स पे थ्रू विच द स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड। तो सबसे पहला हमारा होता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड बाय वेयरिंग द फ्लक्स पर पोल phi। The next one is the rheostatic control method by varying the armature resistance Ra, and the third one is the voltage control method by varying the applied voltage V. तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे पहले मेथड की which is the flux control method. So from the formula we know that the speed is inversely proportional to our phi, and flux control method के केस में हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होता है where M is our motor, A1 and A2 are the armature। यहाँ पर आता है हमारा rheostat, IF is the field current and IA is the armature current। एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा IL है which is the load current वो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो रहा है between IA and IF। अब जो भी हमारा करंट रियोस्टैट पे आ रहा है उसको वेरी करवा के हम लोग हमारे फ्लक्स को वेरी करवा सकते हैं, एंड फ्लक्स को वेरी करवा के हम लोग हमारी स्पीड को वेरी करवा सकते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल अबव द रेटेड स्पीड। बाय डिक्रीजिंग द फ्लक्स द स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड, hence it is called the flux control method. Now the flux can be varied by changing the current through the field winding. Now this is done by connecting a resistance R in series with the field winding. When the resistance of the field winding changes, the current to the field winding changes and hence the flux phi changes, due to which our speed also varies. अब बात करें हम लोग about the advantages, so it is smooth and easy to control. The speed control above the rated value is possible, and the R of the field winding is high. The current IF in the field winding decreases. Therefore, the power loss or ISH square into RSH loss in external resistance is low. Now coming to the disadvantages, the speed control below the rated speed is not possible. Phi can be increased only up to rated value, and as the flux decreases, the speed increases. But high speed affects the communication, making the motor operation unstable. So there is a limit to the maximum speed. अब बात करें हम लोग हमारे अगले मेथड की which is the armature or the rheostatic control, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। So it is used for speed control below the rated speed. The supply voltage is constant. The voltage across the armature is varied by pulling a rheostat in series with the armature. By varying the RA, IA into RA drop varies and hence the speed is varied. बात करें हम लोग इसके एडवांटेजेस की, सो इट इज इजी एंड स्मूथ टू कंट्रोल, एंड द पोटेंशियल डिवाइडर कैन बी यूज्ड एज अ स्टार्टर। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, एज द एंटायर आर्मेचर करंट IA passes through the R, the power loss is high. Now since the IA is greater than IF, the larger size of rheostat is required. The speed above the rated is not possible. Due to larger power loss, this method is expensive, less efficient and wasteful, and it needs expensive heat dissipation arrangements. Now coming to the last method which is voltage control method. अब इसके अंदर भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। So the first one is multiple voltage control. So the field winding is connected to a constant supply. The armature is supplied with different voltages by means of a switchgear arrangement, and the N which is the speed is proportional to these different voltages. And हमारा सर्किट कुछ ऐसा होता है। अब बात करें हम लोग इसी में हमारे सेकंड मेथड की which is वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। तो उसका सर्किट हमारा कुछ ऐसा होता है where G is the generator and M2 मोटर हमारी जनरेटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, एंड यहाँ पर हम लोग दो मोटर्स और एक जनरेटर यूज करते हैं। Now this is a very sensitive method of speed control. M1 is the motor whose speed is to be controlled. Field winding of M1 is connected to a constant DC supply. By applying variable voltage across the armature, its speed can be varied.
Now the variable voltage is applied by using a motor generator set. Now the motor M2 runs at a constant speed. The output of the generator G is fed to the motor N1. Now the voltage of the generator is varied by varying the field regulator, that is the field rheostat of the generator. The direction of the field current can be reversed by reversing the reverse switch, which reverses the polarity of the EMF generated, and hence the direction of rotation of the motor N1 can be reversed. Now talking about the advantages, so wide range of speed control is possible. The speed control can be done in both directions and uniform acceleration is obtained. Talking about the disadvantages, the arrangement is pretty expensive and the overall efficiency is low. So that was all for this video, and I will see you in the next one.